Good evening, everyone. So today we are back with again with another video on the miscellaneous topic. Now, what will this video contain? This video will contain certain questions from the previous years, which have been appeared from the various sections of history, polity, and geography. Now, first let's start with history. So, what kind of questions are expected from a student who has just passed out, who has just done his 12th, or just pass out of the school? Okay, so for example, here is our one question that Treaty of Srirangapatnam was signed between which Indian king and the British? Now, Treaty of Srirangapatnam. Okay, so this treaty was signed in the year 1792 after the third Anglo-Mysore War. So here Anglo stands for English. But English were not alone in this. It also had armies from Peshwa, Nizam. Okay, Peshwa and Nizam of Hyderabad. Okay, so this question came into the examination that between which Indian king and Britisher the Treaty of Sringapatnam was signed. So this treaty was signed in the year in 1792 between Tipu Sultan and Britishers. Okay, so Tipu Sultan was the ruler of Mysore. He became the ruler after his father Hyder Ali, who established the Mysore dynasty, died. Okay, so from the times of Hyder Ali, the rivalry between English and the Mysore started. But at the time of Hyder Ali, though not educated, but he was a great military commander. Okay, he was able to succeed, or he was able to rule. Okay, now Tipu Sultan is also known as the missile, the first person to use rocket, or who having the knowledge of missiles. Okay, so could be said that he was the first person to use rockets in the warfare because he had that knowledge. He was greatly influenced by Napoleon. He even implemented a tree. He implemented a tree in occasion to celebrate the French Revolution, and that tree is known as Tree of Justice. Okay, so this tree was also installed by him. He even joined the Jacobean Club. Okay, now Jacobean Club is related to French Revolution. We will talk about French Revolution in some other session, other class, because it's not coming into examination. So our question was, Treaty of Sringapatnam was signed between which Indian king and British? So our answer is Tipu Sultan. Okay. Our second question is, the first battle of Tarain was fought in the year. Now, if we want to know that from when the actual rule of Muslims or Muslim invaders started in India, or which incidents clarified the rule of Muslims into India. So it would be these Battle of Tarains. You might have all heard and seen the movie Prithviraj Chauhan, though it was a flop movie because Akshay Kumar couldn't wait. He has other movies also. जल्दी रहती है बहुत उन्हें, but he couldn't give the right credit to the movie. So what happened? There was a person, Muhammad Ghori. Okay, so after Mahmud of Ghazni invaded India, he came, he plundered, he went back. He came, he plundered, he went back. He came, he plundered, and went back until and unless he was defeated by Naki Devi. Okay, so after Mahmud of Ghazni's invasions or attack, it kind of opened a way for the Muslim rulers or the people from
Turkey and all these Middle Eastern region or Middle Asia, okay, to attack India because India has always been a melting pot or a great country or a rich country. Okay, so Muhammad Ghori, he also came into India. He started attacking, but each time he was defeated. Why? Because of the Rajputs. Okay, because of the Rajput rulers. And who was the most prominent at that time? That was the ruler of Ajmer, Prithviraj Chauhan. So this ruler defeated Muhammad Ghori again and again. But the two famous battles, which proved to be decisive, okay, if India would not have been that much careless at that time, or if our rulers were together at that time, if we were not betrayed at that time, the condition of India would have been different today. Okay, so our question was the first battle of Tarain was fought in the year. So the answer is 1191. And between whom it was fought? It was fought between Prithviraj Chauhan and Muhammad Ghori. Now another question is who became victorious from this battle? Of course, the answer is Prithviraj Chauhan. So Prithviraj Chauhan won this battle. But in 1190, what happened? 1192, Prithviraj Chauhan was defeated. Though there are many theories that he killed Muhammad Ghori while he was sitting at the throne. That आठ का जंगल अष्ट प्रमाण ताहु पेट sultan, such kind of thing is used. Okay, then there are other theories that he was given back Ajmer and his after he ruled there under the supremacy of Muhammad Ghori. After him his son came and he ruled. Okay, so such kind of theories are also there. So our answer will be 1191, Prithviraj Chauhan and Muhammad Ghori. Who won the battle? Prithviraj Chauhan. 1192, between Prithviraj Chauhan and Muhammad Ghori, who won the battle? Prithviraj Muhammad Ghori. Okay. Now, our another question is the first battle of Panipat was fought between. So, see, there are three battles of Panipat. Okay, so the first battle was fought between. See, this battle between Ibrahim Lodi versus Babur. Okay, so Ibrahim Lodi versus Babur. This battle, first battle Panipat, why it is so important? Because it established a way. It established the foot route for the Mughal Empire. Okay, it paved the way for the establishment of Mughal Empire, ending the slave dynasty. Okay, it ended the slave dynasty. Another question. Second battle of Panipat. The first was between. Second battle of Panipat was fought in the year. So this battle it was fought in 1526. Second battle 1556 between Bairam Khan or Akbar versus Hemu. Okay. Now 1556. What happened in 1556? That time Humayun just died, and after Humayun died, Hemu Vikramaditya or Hemu was a ruler who, at that time, the throne of Mughals was empty. But there was a 14-year-old boy named Akbar under the guardianship of Bairam Khan. So Bairam Khan was a guardian of the new king, to be new king, that was Akbar. So technically, we say uh, Akbar versus Hemu, but in reality it was Baron Khan versus Hemu. Okay, Akbar because Akbar at the time was under the guardianship of Baron Khan. So, second battle 1556 Akbar versus Hemu or Baron Khan versus Hemu. Okay, another question will be third battle of Panipat. So third battle of Panipat was in year 1761 between
Marathas, Shah Alam versus Ahmad Shah Abdali. Okay, in on which the movie Panipat is also based. Although another this movie is flop. See, when we look at the Hollywood movies, Hollywood historical movies, for example, Troy, okay, or 300, okay, or any World War movie, okay, these movies are successful because they show the uh, facts in the way they are. उसमें कुछ मिर्च मसाला नहीं लगाते, but what Bollywood does, first of all, the casting बहुत खराब करेंगे, and second thing, they try to exemplify it to such a level that even a common person can think कि यार ये तो बेवकूफ बना रहे हैं. Okay, they try to experiment with tamper with our history. That's why our historical movies are not that much great. Okay, now there is another treaty, Treaty of Salbai. Okay, so it was between Marathas and English. Okay, another question. So third battle of Panipat was fought between Ahmad Shah Abdali and the Marathas. Okay, now so such kind of questions come into history कि कब कब हुआ, कब क्या हुआ, कब क्या हुआ. Okay, and just like yesterday I promised I will talk about certain movements also. So if we want to remember in the way of chronology, famous movements in the chronology for modern history, let's start from 1900s to 1947. So we will take first one, the Swadeshi movement. Okay, so Swadeshi movement was in the year 1905. ठीक है, against Britishers, cause because Lord Curzon, what he did? Partition Bengal. Because Lord Curzon partitioned Bengal. Although the reason given for the partition was that it's difficult to control such a huge state, because at that time the Bengal which we see today constituted all the neighboring states also. So it was very huge territory. So the Britishers said that it's very difficult to control such a huge territory, but the actual reason was that they wanted to break the Hindu-Muslim unity so that they can make Hindus versus Muslim and Hindu Muslim fight with each other and they can rule as they want. Okay, मतलब आपस में लड़ा करके वो रूल करना चाहते थे, इसीलिए लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था 1905 में, जुलाई 1905 में पार्टीशन कर दिया इसका बंगाल का. सो उसके अगेंस्ट में स्वदेश मूवमेंट चलाया गया था जिसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था. एंड कांग्रेस में क्या है ना, कांग्रेस हमेशा से कांग्रेस वाज स्टार्टेड इन 1885 बाय अ इंग्लिश सिविल सर्वेंट AU. So the reason behind the formation of Congress is the given is the safety valve theory. So this is also important for you because there have been questions कि what is the safety valve theory. So safety valve theory means कि ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि वो डायरेक्टली किससे पंगा ले, इंडियन से ले, डायरेक्टली जो इंडियंस के साथ में वो आर्गुमेंट करे. Okay, so what they created a barrier. Just like एग्जांपल ले लीजिए, अगर पिता अपने पुत्र को पीटता है तो पिता अगर डैड जाके पुत्र को पीटेगा तो जमकर धोएगा, लेकिन कभी हम क्या आती है, माँ बीच में आ जाती है ना, तो माँ दोनों बीच में क्या करवाती है, मध्यस्थता करवाती है. बेटा क्या बोलना चाहता है वो माँ पिता को बताती है, और पिता क्या बोल रहा है वो माँ किसको बताती है, बेटे को बताती है. तो एक प्रकार से झगड़ा भी नहीं हुआ और दोनों की बातें भी एक दूसरे को समझ में आ गई. तो सच काइंड दैट इज नोन एज सेफ्टी वॉल्व थ्योरी. सो सच काइंड ऑफ थिंग वाज क्रिएटेड बाय द ब्रिटिशर्स कि ऐसा कुछ किया जाए, और उसमें पार्टिसिपेट किसने किया, हम लोगों ने किया, हमारी जो इंटेलेक्चुअल क्लास थी उन्होंने किया. क्या किया गया, इट वाज लाइक अ ब्रिज बिटवीन द इंडियंस एंड द ब्रिटिशर्स. ओके, सो दिस इज नोन एज सेफ्टी वॉल थ्योरी.
ओके, सो सेफ्टी वॉल थ्योरी के तहत में ऐसा कुछ होगा। सो 1905 में क्या हुआ था, 1905 में कुछ जो हमारे कांग्रेस के लीडर्स थे उस टाइम पे, वो चाहते थे कि पूरी की पूरी कांग्रेस क्या करे, एक हार्ड डिसीजन ले कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है या फिर क्यों किया जा रहा है। बट कांग्रेस इन एक्चुअल वाज following the principle of three P's: prayer, petition, and protest. So Congress was following these three P's: prayer, petition, and protest. इन तीन चीजों को कांग्रेस क्या करती फॉलो करी थी, और इन तीन चीजों से बहुत से लोग जो कांग्रेस के अंदर थे वो नाखुश थे, जिनमें से मेन जो आपके आते हैं लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल एंड बाल गंगाधर तिलक, जिनको प्यार से लोग लाल बाल पाल बोलते हैं। ठीक है, सो ये लोग उस नाखुश थे कांग्रेस के इस रवैये से कि आप लोगों ने इतना प्यार से उससे बात करें, भाई हटा लो ना, ऐसे कोई नहीं हटाएगा, यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट। ओके, सो स्वदेशी मूवमेंट में हुआ क्या था, व्हाट इज हैपनिंग टुडे इन इंडिया, लोकल फॉर वोकल, नहीं वोकल फॉर लोकल। दैट मींस कि आप अपने बने हुए देश में स्वदेशी जो कुछ भी बन रहा है उसका इस्तेमाल कीजिए और उसी की चीजें यूज कीजिए। फॉरेन गुड्स जो है, ब्रिटिश गुड्स है, उनका बहिष्कार करो, उनके स्कूल्स बंद करो, ठीक है, उनके कॉलेजेस मत जाओ, उनके सामान को यूज मत करो, अपना खुद का कुछ इन्वेंट करो। ये था आपका स्वदेशी मूवमेंट। सो स्वदेशी मूवमेंट ये सब कुछ था। इसके बाद कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि 1960 के अंदर आपका मुस्लिम्स के लिए सेपरेट वोटिंग वाला इलेक्टोरेट बनाए जाते हैं। उसके बाद में आपका 1907 में सूरत शहर कांग्रेस सेशन के अंदर आपका कांग्रेस का स्प्लिट हो जाता है, कांग्रेस दो भागों में बट जाती है। एक आपका नरम दल होता है, एक आपका गरम दल होता है। नरम दल में आपके जो जितने भी लीडर्स थे जो कि आराम से बातचीत करना चाहते थे वो आ जाएंगे, गोपाल कृष्ण गोखले जी, मोतीलाल नेहरू, दीस पीपल। एंड गरम दल में आपके विपिन चंद्र लाल बाल पाल और बिंदु घोष, ठीक है, इस प्रकार के लोग आएंगे। नाउ another important thing, another important thing in the history will be the home rule movement. Okay, now home rule movement, so home rule movement में अब जो prominent नाम आता है apart from बाल गंगाधर तिलक, so बाल गंगाधर तिलक and an Irish lady Annie Besant, इन्होंने मिलके ये जो रूल था, ये मूवमेंट जो था, इसको चलाया था। कहां से, मद्रास से, ठीक है, इन द ईयर 1916। नाउ व्हाट इज होम रूल मूवमेंट, सो वो आयरलैंड के, मैंने आपको पहले बताया, आयरलैंड जो है वो आपका यूके का जो ये वाला हिस्सा है ये आयरलैंड है। इस पे भी एक प्रकार से कब्जा कर रखा है यूके ने या फिर इंग्लैंड ने, इस पे भी एक प्रकार से ब्रिटेन ने इस पे कब्जा किया हुआ था। और ये लोग अपनी आजादी चाहते थे। आजादी किस सेंस की, कि भाई हमारे लिए जो कानून है वो हम ही बनाएंगे, आप लोगों को अगर सुप्रीम रहना रहो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमें होम रूल यानी कि हम खुद का जो रूल है वो हमारे लिए हम ही बनाएंगे, आप लोग उसमें हस्तक्षेप ना करो। तो such kind of thing, such kind of movement they wanted to bring into India. Now another thing which is included with Annie Besant is the Theosophical Society. So Theosophical Society थी, आउट ऑफ इंडिया बनाई गई थी। इसमें तीन प्रोमिनेंट लोग थे, कर्नल ऑकॉट, Annie Besant, and then another lady whose name I can't remember. Okay, so these three persons, Occurs, Annie Besant, and some Russian women, Occurs की something नाम, ऐसे कुछ नाम था उनका। इन तीन लोगों ने मिलकर की थी सर्कल सोसाइटी बनाई थी, ठीक है, और इसकी एक ब्रांच मद्रास में भी खोली गई थी, ठीक है। So our another movement
Now, the main role will be played by Gandhi ji. Okay. सो गांधी जी से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे उन्होंने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था, फर्स्ट सत्याग्रह चंपारण। चंपारण कहाँ, बिहार में। ओके, किसके कहने पे, राज किसके कहने पे, मतलब वो वहां गए थे चंपारण बिहार में, राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला एक किसान था, ठीक है। उसके बाद में राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को कहाँ देखा था, तो बीएचयू में, ठीक है। गांधी जी वहां क्या कर रहे थे, वहां पर वो एक स्पीच दे रहे थे। और गांधी जी को भारत भ्रमण के लिए किसने बोला था, गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है। इनको इन्होंने क्या बोला था कि आप भारत का भ्रमण कीजिए। नाउ अनदर थिंग विल बी, ओके, नाउ जो आपके जीके गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इनको गांधी जी का क्या बोला जाता है, पॉलिटिकल गुरु। यानी गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। नाउ एंड द सेकंड, ये जो चंपारण सत्याग्रह था, ये किस लिए थे, इंडिगो फार्मर्स। ओके, नाउ द सेकंड सत्याग्रह व्हाट वाज इन खेड़ा, गुजरात in 1918। ओके, सेकंड वाज खेड़ा गुजरात 1918। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पर जो किसान थे वो रिवेन्यू, ये टैक्सेस नहीं पे कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ प्लेग एंड फेमाइन्स। क्योंकि उस टाइम पे अकाल पड़ना और महामारियां आना बहुत आम बात थी, गांव के लोग खाली हो चुके थे। ऐसे समय पे जब आपके गांव में अकाल पड़ा हुआ, आपके पास सूखा पड़ा हुआ, आपके खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं, आप अंग्रेजों को कैसे आप रिवेन्यू दे सकते हैं। इसलिए ये प्रोटेस्ट चल रहा था, जिसको गांधी जी ने लीड किया था। इसमें और भी बहुत से लोग इंक्लूडेड थे, और भी बहुत से लोग थे, ठीक। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इनमें आते हैं, लेकिन जो प्रोमिनेंसी आती है वो किसके बाद आती है, महात्मा गांधी जी के बाद, ठीक है। सो हिज सेकंड सत्याग्रह वाज इन खेड़ा गुजरात अगेंस्ट द पेइंग ऑफ रेवेन्यू बिकॉज़ people were already suffering from plague and famines. Third was again in Gujarat, Ahmedabad. Okay, third was in Ahmedabad. Again, Mahatma Gandhi and Sardar Vallabhbhai Patel were leading this movement, and under this movement, what happened that the people, the male workers were asking for better wages, यानी कि उनको अच्छी क्या चाहिए थी, वेज चाहिए थी। वेज मतलब क्या होती, तनख्वाह चाहिए थी। ओके, सो these were the movements which made Gandhiji who is today। ओके, सो यहीं से उनकी शुरुआत होती है। इसके बाद में जो और भी बहुत से प्रमुख मूवमेंट्स आते हैं, जिनमें आपका एनसीएम आएगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आएगा 1920 में, ठीक है। 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसके साथ मिलेगा, खिलाफत मूवमेंट के साथ, ठीक है। उसके बाद में 1930 में आएगा आपका दांडी मार्च, गांधी इरविन पैक्ट, और उसके साथ ही सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आएगा, ठीक है। उसके बाद में 1942 में गांधी जी का एक और मेन मूवमेंट आता है, जिसको क्या बोला जाएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी भारत छोड़ो आंदोलन। और इसी आंदोलन में इन्होंने कौन सा नारा दिया था, डू और डाई। सो दिस सच is the basic from which questions will be coming in your history portion. Although I'm really sorry that today's video was short, we couldn't cover the entire thing about geography and polity, but in tomorrow's video we will try to cover both the portions from polity and geography। geography से इतने questions नहीं आते, geography से जो question आएंगे वो आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आप जितना अच्छा मैप को रट लोगे ना, मैं सच बोल रहा हूँ, रट लो। रटना क्यों है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन डायरेक्ट वहीं से आते हैं। दैट मींस आपको रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज है उनके नाम, आपकी रिवर कौन सी कहां तक फ्लो करी उनके नाम। इसके अलावा आपको वॉल्केनो क्यों निकलता है, तो कल हमारे टॉप जो मेन टॉपिक होंगे वो होंगे वॉल्केनो, ठीक है। उसके बाद में अर्थक्वेक, कल हमारे ये टॉपिक्स होंगे, वॉल्केनोस, अर्थक्वेक एंड टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स में जैसे आपका कास्ट टोपोग्राफी आएगा, आपके अटोल्स आएंगे, आपके बैरियर आइलैंड आएंगे, आपके स्पिट आइलैंड आएंगे, केव्स, क्लिफ्स, शैफ्ट, सब काइंड ऑफ आर्क, एसिडिटी कैसे बनती है, सिंक होल्स,
ठीक है, स्टैलेक्टाइट, स्टैगमाइट, ये सब कैसे बनते हैं, इन सब के बारे में कल की वीडियो बताया जाएगा। तुम्हारो कल आप लोग पक्का पक्का देखिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा कि इसको क्या बोला जाएगा, ऐसे स्ट्रक्चर कहां पे पाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, ऑल्दो आवर चैनल इज न्यू बट वी हैव एक्सपीरियंस कि हम लोगों ने क्या क्या गलतियां की हैं और आगे के आने वाले लोग उसमें क्या क्या गलतियां ना करें। वी डोंट हैव दैट मच गुड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बट वी आर ट्राइंग, एंड वी आर ट्राइंग ऑन द बेस ऑफ experience and past mistakes. Okay, and we are trying to teach you on the basis of those past mistakes. Okay, thank you.